This meeting is being recorded. So, in today's class, what we need to talk about, scalars and vectors. So, what are scalars? Scalar quantities are those quantities which can be specified by magnitude, unit, and they do not require specific direction. That does not mean उनकी direction नहीं होती, but a specific direction नहीं होती. Now, for example, I just showed if I'm coming from one area to my home, I have to change my direction more than once. So it's not a single specific direction. That is why we say vectors में directions नहीं होती. Walaikum assalam Matul. So if we write down the definition of scalars, scalars are the quantities that are specified by magnitude, and unit only. They don't have specific directions. Okay, Iman is saying, Walaikum Assalam Hamza. Iman is saying, vector quantities are quantities that have specific magnitude, unit, as well as direction. Yes. So here we see the mass of Anas Abdul Habib. Anas is an actual student. क्लासेस में बहुत बातें कर रहा था तो मैंने हर वर्कबुक में इसका नाम लिख दिया. कैसी सजा दी? खैर. So Anas का mass 50 kg. So in order to just specify mass, we only need magnitude, we only need unit. We don't require direction. So here 50 is magnitude and kg is unit. तो कुछ एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटीज की क्या है? मास, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, पावर, एनर्जी, वर्क और कौन सी है? टाइम. ठीक है, एक्सेट्रा. कुछ मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स बता दी. व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ईमान ने बताई. The quantities that are specified by magnitude, unit, as well as specific direction. Walaikum assalam Ayan. And the okay, acceleration and velocity. मेरी कोशिश होगी जितने मुझे याद आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज उन सब के नाम आपको लिखवाऊं. कि we will be having a lot of MCQs जिसमें ये बात कर रहा होता है एग्जामिनर कि which one of them are scalar, which one of them are vector. ठीक है. So vector quantities are those which require magnitude, unit, as well as specific direction. The quantities that are specified by magnitude and unit, as well as specific
direction. Vector quantities. Okay. And the examples are velocity, acceleration, force, moment, या जिसे टॉर्क भी कहते हैं आप, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं आप. So these are the examples of vector quantity. So example मैंने क्या कहा, the weight which is the force of Anas Abdul Habib is 500 Newton. So here 500 is magnitude, Newton is unit, and downwards is direction. Okay, this is how you can see that vector quantities are these. So similarly, जब scalar था तो direction एक irregular manner में जा रही थी, direction was keep on changing. But in vector, you can see we have a single specific direction. Okay, beta? Density is scalar. हम ऊपर density को लिख सकते हैं. Density is a scalar quantity because density is mass over volume. Both are scalar, so density will be scalar. ठीक है? Pressure is vector. Pressure को यहाँ पे आप include कर सकते हैं. Pressure हो गया, stress हो गया, ये सब vector है. So now we need to talk about some specific. All vector quantities can be negative. Vector quantities, yes, they can be negative, but negative का मतलब होता है the direction is opposite. For example, if this is a vector which is F equals to 120 Newton, तो F equals to minus 120 Newton कब होगा? If the direction is the opposite. तो ये होगा F equals to minus 120 Newton. So here the minus is representing the direction being opposite. Okay, Afifa? Cool. चले आगे बढ़ते हैं. Now, if you look at these four pre-specified directions, like you have heard the name news, the meaning of news is north, east, west, south. उर्दू में कहा जाए तो मशरक, मगरिब, शुमाल, जुनूब की खबरें. ठीक है? So when I used to be a student, how I used to remember these pre-defined directions. V लिखते हो ना, V हम, तो west is towards left, east is towards right, north south. That is how I used to remember. ठीक है, कि north किधर है, south किधर है, east west किधर है. ठीक है. Now I need to tell you how to represent a vector. आप एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमें इसकी बात करनी है. So if you look at representation number 1, draw a vector of 30 Newton.
First of all, I'll see I have a ruler, and that ruler does not have a 30 Newton reading. In fact, that ruler does not have reading in Newton. So I just have a ruler which can only measure in centimeters. So what do I have to do? I have to make my own scale. That is normally called scaling or calibration. इसे scaling भी कहते हैं और इसे calibration भी कहते हैं. ठीक है? तो देखिए मैं किस तरह scaling या calibration करूंगा. First of all, see whatever scale you are making, it should not be too much large or too much small. Okay, and we'll be using sharp pencil to draw vectors. Even every diagram should be drawn by pencil. Okay, so tell me one thing. आपके microphones on कर दूं? Yes, tell me one thing. हमारे पास 30 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. So these are the मल्टीपल्स जिनमें टेबल्स जिसमें 30 आता है. तो अब इसमें जो सेंट्रल रेंज है ना, वो आप सेंट्रल रेंज चूज कर लो. तो इधर मेक अ स्केल रिलेटेड टू 5, 6 और इवन यू कैन आल्सो यूज 10. तो नॉट टू स्मॉल, नॉट टू लार्ज. ठीक है, यूज द मिडिल रेंजेस. So I can make my scale as 1 centimeter equals to 5 Newton, or 1 centimeter equals to 6 Newton, or 1 centimeter equals to 10 Newton. Okay, so I'm going with 5 Newton. What I said, if 1 centimeter equals to 5 Newton, then how much centimeters are equivalent to 30 Newton? What I'll do, I'll cross multiply. Okay, and with this, what do we get? 6. X equals to 30 upon 5, 6 centimeter. ठीक है, this is how आपको. I'm good, Shayan. Why you are late in the class? Yes, Iman, it's 1 centimeter equals to 5. You can discussion group. I think we don't have discussion group up till now. You can send all the messages privately. ठीक है, okay, so I'll draw a vector of 6 Newton towards west. So west is where? कैसे बताया था? V. On the And left west is side. towards left. So I'll draw. First of all, मैं वेक्टर जो बना रहा हूँ उसे 6 सेंटीमीटर का बनाऊंगा. Like this. ठीक है, just to show it is towards west. मैंने एरो बना दिया वेस्ट की तरफ. ठीक है, and the final thing, label your vector. It was 30 Newton towards west. So this is how we can draw our vector of 30 newtons towards west. ठीक है, और सर ऑल्सो सर रिकॉर्डिंग लिस्ट आर इनएक्सेसिबल. पॉसिबल नहीं बेटा, ग्रुप में ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग्स का जो है ना लिंक डाला हुआ है. नहीं नहीं बेटा, आप मैसेज करो, मैं जवाब दूंगा. जो हमारी एएस की 2024 की रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सेसिबल. ठीक है, इवन अभी तो फिलहाल मैं पब्लिक वीडियोस डाल रहा हूँ.
ठीक है, so this is how we represented our vector number 1. All clear? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं. And now draw a vector of 25 meter per second at an angle of 30 degrees with respect to x-axis. तो first of all हम जरा अपना स्केल देखते हैं. 25 1 में आएगा, 5 में आएगा and 25 में आएगा. So we need to make a scale of 5 meter per second. ठीक है? So if 1 centimeter equals to 5 meter per second. So x centimeter equals to 25. What you did? Cross multiply. And x will be equal to 25 upon 5 centimeter. Yani we need to draw our vector up to 5 centimeter. It says no result found. The recording playlist. What are you talking about? Let me see. We have our AS हमारा कहाँ गया? ये रहा. अच्छा, ये तो एक्सेस का है. ये रहा. ठीक है. So this is our YouTube link. ये कौन सा लिंक खुल गया? जस्ट अ मिनट, मैं भी ये मसला हल कर दूं. दो मिनट दीजिएगा बस. ओके शायान, आई थिंक आप देखते हैं अब चलेगा. ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और अभी हमारा लेक्चर नंबर 11 चल रहा है. ठीक है. ठीक है. अब कर लिया. अब देख लो आप, वो पुरानी प्लेलिस्ट का लिंक मिला हुआ था आपको. Draw a vector of 25 meter per second and angle of 30 degrees with respect to x-axis. तो हमें 5 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाना है and that vector should be 5 centimeter plus with respect to x-axis 30 degrees. So here already मैंने protractor and ruler की placement आपको दिखाई भी है. So 10, 20, 30. So first of all, I need to make sure that I'll show the x-axis. And then we'll draw our vector of 5 centimeters. The direction is 30 degrees and the vector is 25
ms minus 1. ठीक है, तो this is how we can specify our vector. Do you take extra classes? Because I have missed the old sessions. Okay. So भैया हम एक काम कर सकते हैं that you go through recordings and if you have any question you can message me on WhatsApp on this number 031508057775. This is my number which I have dedicated for students. तो आप इस पे whatever you are having difficulty आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं. Okay. And do send message to chat questions because this screen is in front of me. Clear है बेटा? Second representation भी clear है, समझ में आ गई? Clear, sir. Okay. Now let's move ahead. And अब हमारे पास the third representation just to and for your kind information that video of how to represent a vector. I've already posted this video ages ago on YouTube. If you want to have this once again, तो आप बस इसे scan कर लीजिएगा if you have workbooks. So draw a vector of 12 pascals at not 20 degrees west. पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं. Not 20 degrees west. So this direction represents west and this direction represents north. And if you move not 20 degrees west का मतलब क्या है? If you move from north to west and you cover 20 degrees, 10 degrees, 20 degrees. Now where you land is not 20 degrees west. ठीक है? That is 110. ठीक है? So ये बात हमने पहले कर ली. Now 12 1 की टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 12 में आएगा. So the middle ranges are these or 3, 4. ठीक है? So we can choose 3. That is if 1 centimeter equals to 3 pascals, then x equals to 12 pascal. We did our cross multiplication and x will be equals to 12 upon 3, that is 4 centimeter. So now अब हमारे पास क्या सिनेरियो होगा? We draw a vector of 4 centimeter. And the direction here is not 20 degrees west. The magnitude of the vector is 12 pascals. So this is how you have represented one more vector. And in तीन representations के through, yes, you can draw 3 centimeter as well. That 1 centimeter equals to 4 pascals. अगर आप लेके चल रहे हो 1000, तो your answer will be up to 3 centimeter. That is completely applicable. You have to choose your own scale. बस मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है. Look at the vector. He is asking, break it down. Like 12 pascals can be in 1, 2, 3, 4, 6, 12. इन tables में आएगा और आप middle वालों को choose कर लें. ठीक है? Have you shared this PDF? Yes. ये अभी शेयर पिछली क्लास तक तो शेयर हुई हुई है बेटा, लेकिन अगर आप इसी पे जाओगे ना तो ये देख रहे हो आप PDF बैंक, तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ जैसे पिछले हम लोग O लेवल्स में करते थे. ठीक है?
So this is how we'll be representing our vectors. Clear? Yes, sir. So अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं and now we need to talk about addition of vectors. तो पहला हमारे पास addition of vector का जो तरीकेकार है, that is when vectors are acting in the same axis. For example, both vectors are along x-axis, and if both vectors are along y-axis. You can also have more than two vectors, but they should be in the same axis. अब इसमें भी दो डायरेक्शन निकलती है. Both vectors are in the same direction. For example, ये भी x-axis में है, ये भी x-axis में है, but they have same directions. So they will be added. But if two vectors are in same axis and they are in opposite direction, they will be subtracted. ठीक है? So yes, Iman, it's 10 Newton, 10 Newton, both are towards right. So my resultant will be 20 Newtons towards right. अभी मैं सिर्फ डमी वेक्टर बना रहा हूं, मैंने कुछ मेजर करके नहीं बताया. It's 20 Newton to the right. Similarly, the vectors are acting in opposite directions, they will be subtracted. And the resultant vector is or will be in the direction of bigger vector. So 10 minus 6 is 4 Newton. बड़ा वेक्टर कौन है? 10. 10 की डायरेक्शन में. Either you draw 4 Newton here or here, means same. कोई मसले की बात नहीं. 4 Newton to the right. Okay. So एक सवाल आपके सामने है. What do you think the answer will be? Won't it be left? अमल, ये लेफ्ट की तरफ तो देखे छोटा वेक्टर है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होती है. सिंस बिगर वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट, दैट इज व्हाई रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स राइट. ठीक है? ओके. So now 4 Newton towards east or 4 Newton towards right. चलें देखते हैं. बेटा देखें, these two vectors are in opposite direction, so they will be subtracted. So 4 minus 4, 0. So they cancelled out. अब बचे सिर्फ ये दो. So 8 Newton is a bigger vector. They are in opposite direction. So what will happen? They will be subtracted, and the resultant vector will be towards the bigger vector, that is right. Once again, मैं कुछ measurement करके vector नहीं बना रहा. They are just dummy vectors. Okay. Right, sir. Okay. So if you are new to the class, you want to get registered, you can send message on WhatsApp to Sir Salman Hashmi. You'll be able to get yourself registered. Okay. Okay. अब हमारे पास डिस्कशन आ रहा है add and subtract co-planar vectors. तो co-planar vectors से क्या मतलब है, पहले ये थोड़ा सा समझते हैं. प्लेन समझें पहले. व्हाट इज प्लेन? तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये जो पूरा हमारे पास बना हुआ है ना, दैट इज एन एक्स वाई प्लेन. ठीक है? सिमिलरली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. ये जो पूरा हमारे पास बना हुआ है, ये
XZ प्लेन है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस, ये जो पूरा हमारे पास बना हुआ है दैट इज YZ प्लेन। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊं, Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस, so this one is one plane, this one is the other plane, this one is the third plane, okay. Since this was X, this was Y, this was Z, ये XZ plane है, ये YX plane है, ये XY plane है, और ये YZ plane है, ठीक है। So that is how we do talk about planes. Okay. So coplanar vectors are those vectors which are lying on the same plane. XY plane पे दोनों vectors हैं, XZ planes पे दोनों vectors हैं, YZ plane पे दोनों vectors हैं. These vectors are called coplanar vectors. ठीक है. So we have two vectors A and B. तो ये कौन से plane पे आ रहे हैं? X और Y plane पे आ रहे हैं, ठीक है. So that is why they are XY coplanar vectors. And we need to add two vectors. How many of you do remember the method we used to do in O levels or IGCSE by the name of tip to tail rule? याद है किसी को टिप टू टेल रूल? कैसे होता था Yes, टिप टू sir. टेल रूल? हाउ वी यूज्ड टू डू टिप टू टेल रूल या हेड टू टेल रूल, दूसरा नाम इसका हेड टू टेल रूल होता है. So can anyone explain किस तरीके से we solve tip to tail rule और head to tail rule? From the tail of first vector towards the head of Sir. second vector, ये तो resultant बनता था जी. हाँ बोलो अमल. Sir, we draw the first vector and then place the tail at the head of that. Okay. Like- Then Yes, sir. We take two vectors and then we place the head of one onto the tail of one. okay. तो यहाँ पे देखें क्या होगा. मुझे आप लोगों को add और subtraction of coplanar vectors देखें किस तरीके से करते हैं. ओके पहले A लिखा हुआ है, तो we will join the tip or head of vector A with the tail of vector B, ठीक है. Now ईमान, we need your help. आपके पास I think workbook है. Can you measure the length of this vector and this vector? Yes. जी, इसका और इसकी मेजरमेंट स्केल के थ्रू, रूलर के थ्रू मेजर करके बताएं. Sir, first one is 4 centimeter and second one is 4.6 centimeter. First one is 4 centimeter. 4 centimeter. Okay. The second one, Second one is 4, 4 point 4.6. 2.6 सेंटीमीटर. क्या गुड न्यूज है शायान?
बताओ हमें भी। सो दिस वेक्टर को सबसे पहले हम लोगों ने मेजर किया, ठीक है, एंड वी गॉट एन आंसर। मुबारक हो, नाउ यू आर elite क्लास विथ पेंसिल। अब तो भाई बेहतरीन। ओके, सो यहाँ पे जो वेक्टर ए है, वी मेजर्ड वेक्टर ए टू बी 4 सेंटीमीटर एंड वेक्टर बी टू बी 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें, वी आर डूइंग, we are adding two vectors and the first vector is A, the second vector is B. So what I'll do, I will तो मेरे पास यहाँ पर एक रूलर है जिसकी मदद से मैं 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, या just a minute, maybe we can have a better alternative of it. बल्कि ओके ओके, एक काम करते हैं, इससे भी काम हो जाएगा, बट ज्यादा बेटर काम करने के लिए आई नीड टू कनेक्ट माय ग्राफिक्स टैब। ग्राफिक्स टैब थोड़ा सा मसला कर रहा है, सो लेट मी शेयर माय न्यू स्क्रीन। मैं पहले देख लेते हैं इससे कैसे काम बनता है। ओके, इससे काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला वेक्टर क्या था? और फर्स्ट वेक्टर वाज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वाज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दैट इज आवर फर्स्ट वेक्टर ए व्हिच इज टुवर्ड्स राइट। ये साइड में एक काम करता हूँ मैं अपनी, ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटीमीटर इज टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज 20 न्यूटन which is equivalent to 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। ये ऊपर देखें, ए एक्स की जगह पे लिखा हुआ है इट्स 10, तो आई हैव टू डिक्रीज, ये आ गया फुल, लेकिन ये बहुत छोटा आ रहा है। एक काम करते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन। ओके, वी हैव ओपन बोर्ड, ये रहा। तो दिस वे हम जरा इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। चलो, सो लेट मी ब्रिंग रूलर, ये आ गया हमारा रूलर, ठीक है। And with this ruler, what I'm doing, I'm going to draw a vector and that is of 4 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में मैंने इस वेक्टर के डायरेक्शन भी बना दी
that is towards मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अगर हमारा ये ग्राफिक स्टेप चल जाता है तो बहुत आसान काम हो जाएगा। नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो दैट इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर, या जो इसका नाम है विच इज 20 न्यूटन, वो मैं इसे लेबल कर देता हूँ। ठीक है, cool। दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा था बेटा? दूसरा वेक्टर था हमारे पास आई सी 4.6 सेंटीमीटर का एंड 30 डिग्रीज पे। तो ये देखें, ये हमारा एक प्रोटेक्टर आ गया जो कि मैंने 4 की टिप पे रखा, 20 न्यूटन के टिप पे रखा, एंड वी हैव टू गो टू 30 डिग्रीज लाइक दिस। ये 30 डिग्रीज बहुत प्रिसाइज है ये, मैं इतनी प्रिसीजन, चलो आ गई प्रिसीजन। एंड ये जो हमारा रूलर है, इसको मैं 30 डिग्रीज पे अलाइन करता हूं लाइक दिस। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। वेयर कैन आई चेंज? ये रहा। तो 4.6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 4 आ गया, ये 4.6 यहां तक आ गया। नाउ हम 4.6 सेंटीमीटर इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? 35 न्यूटन वेक्टर। ठीक है, अब ये जरा हटा देते हैं। दिस इज आवर डायग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल add these two vectors using tip to tail rule। किस तरह ऐड करेंगे देखें। join that, जैसे सज्जाद कह रहे थे, join the tail of first vector with the tip of second vector like this। और ये कितनी आ रही है लेंथ? इट्स अराउंड 8.4। so this is going to be our resultant। एक मिनट रुका, यस, तो ये हमारा रिजल्टेंट है जो कि 8.4 सेंटीमीटर्स का आ रहा है। एंड रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है, दैट डायरेक्शन शुड बी ड्रॉन इन द मिडल। ठीक है, सो 8, सॉरी आई हैव टू यूज माउस क्योंकि मेरा ग्राफिक्स टैब थोड़ा सा मसला कर रहा है। 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो स्केल था उसे हम गो थ्रू करें, वो क्या था? 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू जो हमने देखा था। 4 सेंटीमीटर हमारे पास वेक्टर ए का क्या आ रहा था? 20 न्यूटन के बराबर आ रहा था।
ठीक है, तो 8.4 सेंटीमीटर कितने के बराबर आ जाएगा? x. तो लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 42. 20, let's see, multiply by 8.4 divided by 4. It's 42. Yes, sir. 42. तो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है 42 न्यूटन का। ठीक है, नाउ एक वेक्टर उस वक्त कंप्लीट होता है when we have both magnitude and direction. We do have magnitude of 42 Newton. Now let's find out direction. So for direction, the direction of our vector is around 17 degrees. ठीक है, it's around 17 degrees or 6.5 you say. थोड़ा सा जूम होना चाहिए. Yes. तकरीबन 16.5 आ रही है. So the direction here is 16.5 degrees. ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई. सो वी हैव मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट टू 42 न्यूटन and we have direction as 16.5 degrees. Clear है बेटा? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, perfect. So this is how हमारे पास डिस्कशन कंप्लीट होता है कि a plus b को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. I have been looking for a software like this, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे पास अवेलेबल नहीं है iOS में, या वी हैव टू कन्वर्ट. तो अगर आपको नॉलेज है, को आपको पता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वी आर एबल टू डू दीज थिंग्स इन एप्पल और iOS iPad पे, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प. तो मुझे जरूर बताइए. अमतुल, दिस सॉरी अफीफा, दिस वाज ओपन बोर्ड, और ओपन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ विंडोज और मैक के ऊपर अवेलेबल है. अब वो iPad या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस पे अब अवेलेबल नहीं है. दैट इज वॉज ओपन बोर्ड. बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट वी नीड दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन व्हाट डू वी से in our iOS devices as well, because this will be a great help to teachers. So what I'll do, I'll post the screenshot of whatever we did on open board. ठीक है, यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा. Similarly, a minus b. Now what we'll do, I told you, just like when Afifa asked, can the vectors be negative? I said yes. But the magnitude of the vector do not get negative. The direction of vector gets opposite. So just hope हमारा ओपन बोर्ड वाला काम जाया ना हुआ हो. आई थिंक जाया नहीं हुआ, हो गया. Oh, so कुछ Sir, I have the screenshot. you have a Should I screenshot. send वो it? मसले की बात नहीं है, वो मुझे सेंड कर दे आप. Okay, सही है. sir. So what we'll do, we'll do the same thing. हमने ऑलरेडी इसकी वर्किंग की हुई है. So देखें, यहाँ पर हम
सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी है ना, तो विल ड्रॉ ए हमारा 4 सेंटीमीटर का था, तो a was 4 सेंटीमीटर, so 1 till 4. Let me zoom it more. Yes. And ये आ गया, and that was 20 न्यूटन. ठीक है. Now we need to draw B. अब B की डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब क्या है? We have to place our protractor opposite. हमें अपना प्रोटेक्टर ऑपोजिट प्लेस करना होगा. ठीक है, देखें प्रोटेक्टर कैसे प्लेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिक्रीज द साइज. ओके, तो ये देखें, we have to use, we have to place the protector like this. And now we'll use -30 instead of 30. ठीक है, और इस स्टेज पे हम अपना दूसरा वेक्टर बनाएंगे. Just decrease the size. The second vector was 4.6 centimeter. Oops. Yes. .6. तो ये आ गया हमारा 4.6. ठीक है, draw the vector head which is 4.6. Now let me put the ruler and protractor aside. This is our 35 Newton vector. Now we need to draw resultant. For resultant, what we'll do, join the tail of first vector with the tip of second vector. How to swap it? Like this. So how much it will be? Around 2.3. Okay. So our resultant will be this 2.3. Here's 17.5 Newton. पहले देखते हैं, उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे. 4 सेंटीमीटर 20 न्यूटन के बराबर था, and here 2.3 centimeter x. We did cross multiplication and it will be 20 multiplied by 2.3 divided by 4. क्या बता रही हैं? 17. Sir, 11.5 आ रहा है इससे. 11.5. Yeah, 11.5.
सर व्हाट इफ अगर हम लाइक दूसरा स्केल यूज करें, लाइक स्केल नहीं, दूसरी रीडिंग, the way we had 35 Newton as 4.6 centimeter. हाँ, हो सकता है, बट स्केल दोनों वेक्टर्स के लिए एक ही चूज करना चाहिए हमें, ठीक है? Okay, so the answer So, can deviate, yes. right? So 11.5 न्यूटन इज आवर All right, sir. मैग्नीट्यूड. अब जरा इसकी डायरेक्शन देखते हैं. So in order to have direction, ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री से जरा सा ही कम आ रहा है शायद. So let me see. 90 डिग्री तो I mean with respect to y-axis it's almost 1.5 degrees with respect to y-axis. ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा सा कम आ रहा है. ठीक है. So or you can also write it as how do we write it? अगर मैं, हाँ, मतलब अगर ये वाला हमारा 90 डिग्री है, बस इतना सा एंगल कवर हो रहा है 1.5 डिग्री. तो आई कैन डू दिस कि मैं यहाँ पर 90 डिग्रीज का एक डॉटेड लाइन बनाऊं और इतने छोटे से डायरेक्शन को पॉइंट कर दूं, मार्क कर दूं. ठीक है, तो दिस इज हाउ आप इसको डील कर सकते हो. सही है. आई लुक इनटू इट, कि स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. आई लुक इनटू इट कि हमारे पास हमारे जो क्या नाम है इसका ग्राफिक्स टैबलेट है उसमें क्या हुआ है. इतनी गंदी राइटिंग जिंदगी में पहली मर्तबा की है मैंने. कूल. सो चलें वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व और वी ऐड टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल. हमने प्रॉपर मेजरमेंट्स ली. मेजरमेंट्स के साथ उसको मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया बाय यूजिंग टिप टू टेल रूल. और एक और तरीकेकार होता है जिसे पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग जस्ट टिप टू टेल रूल. ओके बेटा. सर कैन यू Right, समराइज द sir. स्टेप? बेटा, these are the steps I use. Let me show. You can take a screenshot. ठीक है सज्जाद? Sorry. So this was the first class on the topic known as scalars and vectors, and you can message to Sir Mustaqim. He'll be able to arrange delivery for you. So this was the first class of scalars and vectors, and coming class में we have to do more क्या कहते हैं working. And if I show you what we need to do, we'll solve some past papers. Balki, first of all, I'll teach you how to resolve a vector into its components, and afterward we'll do some working. So I'm uploading one document on Google Classroom. Do download it and do print it. We'll be needing that document in the coming class. Yes, beta? Sir, Sir, is it the same one? Sorry. Sorry? Sir, is it the same one जो आपने ग्रुप पे भेजी थी? ग्रुप पे मैंने कुछ भेजा था? जी, आपने कहा था like for the next class we might need it. ग्रुप पे सेंड किया था मैंने, तो फिर वो वही चीज है. ऑलरेडी अगर मैं ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ, सॉरी मेरा दिमाग जो है वो 10 जगहों पे फंसा हुआ होता है. तो अगर मैंने ग्रुप पे कुछ सेंड किया है तो दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट मी सी. यस, यही वाला है 1.4 जिसकी मैं बात कर रहा था. All right, sir. एंड मे बी आई अपलोड मोर. तो फिलहाल तो ये भी काफी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए. कूल. तो दिस इज इट बेटा.
आज की क्लास में हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा बहुत स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में समझा। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यस बेटा। Sir, when we were doing the cross multiplying to find out the 2.3s, in Newton, can we use 35 Newton as well instead of using बेसिकली 20? मैंने यहाँ पे दोनों को मेजर करवा लिया, मतलब ये तो मेरा डिजाइन हुआ हुआ एक तरीकेकार था। एग्जामिनर आपको टू द स्केल दोनों वेक्टर्स देगा, तो आपने दोनों इस वेक्टर्स का स्केल सेम होगा, तो आपने एक ही स्केल, एक ही जो है क्या कहते हैं स्केल यूज करना होगा। इधर यू कैन यूज 4 सेंटीमीटर वाला पार्ट और इधर यू कैन यूज 4.6 सेंटीमीटर वाला पार्ट। ठीक है, Okay, sir. Okay. Thank you. ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। यू लिव इन यूएई, तो फिर यूएई में तो डिलीवरी मुश्किल होगी। वी कैन मेक arrangement for soft copy and you can print that soft copy at your place। ठीक है, तो वो भी आप सर मुस्तकीम को बता दिएगा, लेट यू नो। ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह Love it, हाफिज। sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafez, sir. अल्लाह हाफिज।